Dr. Chinmaya Pandya among us, who is the Pro Vice Chancellor of Dev Sanskriti University, Haridwar, India. A spiritual person like Chinmaya Pandya, Dr. Chinmaya Pandya, cannot be introduced. Born and brought up in a spiritual academy, an ashram in Santikunj, Haridwar, India, Dr. Pandya completed his medical graduation and went to the United Kingdom to pursue higher education. Upon completing his master's degree from the University of Wolverhampton, if my pronunciation is correct, UK, he as well accomplished an MRCP from London in psychiatry. As a consultant in West London Hospital Trust, London, and as associate specialist for Alzheimer's disease treatment service, he was helping patients to recover from the rare and difficult diseases. After gaining rich experience and expertise, answering to the inner call to serve the nation and humanity, he returned to India and joined Dev Sanskriti University, which is dedicated for the cultural renaissance of the globe as director for School of Yoga and Health, and presently is also serving the socially dedicated university as Pro Vice Chancellor. He is also the director of School of Yoga and Health and chairperson of the world-renowned International Festival of Yoga, Culture and Spirituality. He has also been the convener of International Conference on Veda and Vichar Kranti, International Conference of Gathering of Elders, and International Conference on Yoga, Vedic Culture and Ayurveda. He has contributed to many research studies and is also the editor of International Journal on Vedic Culture called Dev Sanskriti. His spiritual and managerial capabilities are helping the university to grow leaps and bounds, and also humanity to develop in various dimensions. And through his able leadership, the university is becoming a model institution in its domain. Having said this, now I would request Dr. Chinmaya Pandya to come and take the dais and start his address. Over to Dr. Chinmaya Pandya. Dhanyavad, Bhanuji. Before I begin, I just wanted to say that you have heard some good things about us, and whatever good you would see in us actually is all the blessings, direction and guidance of Param Pujya Gurudev, who was a great visionary, a groundbreaking scholar, a great human being, a divine human being, and whatever good, whatever there is to see in our personality is all because of the blessings that we have received from him, and whatever wrong that you would see in us is because of us only. Maharshi Arvind said a very wonderful thing in the book called Life Divine. He said that there are no coincidences in the world of divine. भगवान की दुनिया में कहीं कोई संयोग नहीं घटता. Whatever random and unpredictable occurrences that we have in our lives, they have got a connection. हम लोगों को पेड़ दिखाई पड़ता है, बीज दिखाई नहीं पड़ता. But seed is responsible for the tree. तो कहीं ना कहीं बीज होता है और तभी पेड़ निकल करके आता है. It is not a coincidence that we are talking about this organizational transformation through social service on this evening, when in the morning we have started transforming the structure of the Nepal, the Kathmandu, Bagmati river this morning through the social service itself. मैं कुछ बोलूँ इससे पहले शांति कुंज से हम लोगों की बहुत डेडिकेटेड टीम, जिनने भारत की 8 बहुत बढ़िया नदियों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, वो हम लोगों के बीच में मौजूद हैं. मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार खड़े होकर वो सब लोगों की तालियों को एक बार रिसीव कर लें. They all are learned people. We may be wearing yellow clothes, but they are very learned people. 2 of them are mechanical engineers, 2 of them are actually high professionals in agriculture. One is sitting here with IIT background, and they have worked hard, relentlessly to make this happen. And the only concept behind that was to go for the social service. Now, before I begin, I just want to share 2 quotes with you. 2400 years ago, one of the greatest Greek philosopher, Heraclitus,
he said an interesting thing. He said there is a theory of attraction in opposite. कि हम लोगों को जो opposite होता है वो attract करता है. So if somebody in suit is standing here and talking about spirituality, everyone would be interested. Ken Wilber खड़े हैं, Shambhala खड़े हैं. And now someone in yellow clothes is standing here and talking about organizational transformation, then I am sure that I would get some attention. So I am very thankful for that attention. Second thing I want to share is a quote by Gurudev. Gurudev said that there are two types of writers. दुनिया में दो तरह के लेखक होते हैं. One who provoke anger and the other who provoke emotions. एक वो जो गुस्सा भड़काते हैं और एक वो जो भावनाएं जगाते हैं. तो गुरुदेव ने कहा गुस्सा भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं, आदमी वैसे ही बहुत गुस्सा है, उसको और ज़्यादा भड़का करके क्या फ़ायदा. आदमी की भावनाओं को जगाना चाहिए. और दूसरा, he said that there are two types of speeches. One that gives you a plant, आपको एक पेड़ दे देते हैं कि आपको ये लगाना है. And one gives you a thought to plant a tree. ये दूसरा आपको ऐसा विचार देते हैं कि आपको जा करके कहीं पर कोई योजना शुरू करनी है. And although I cannot give you the plant right now, I would like to give you a thought कि आप लोग जा करके इस सोशल सर्विस को शुरू कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज देयर फॉर मी, कि मैं इस वर्कशॉप में यहाँ अटेंड कर रहा हूँ पर मैं क्या लेकर के जाऊँगा. वी आर नॉट टेलिंग यू टू गिव एनी मनी, वी आर नॉट हियर टू प्रीच यू, वी आर नॉट हियर टू कन्वर्ट यू, वी आर नॉट हियर टू गिव यू समथिंग एल्स, बट वी आर हियर to give you some thought, some perspective about the society and the humanity in general. So this concept, before I begin to talk about this concept, because there are not many slides, I want to share one story with you, and I hope that you would enjoy listening to that story, because that's a real story. It is a story of one person that I have quoted many times, but his life I found very remarkable. His name was Sharat Chandra Innamalai, and I think it's a story of 1980s or something. He was son, or he is the son of a lady who was selling idlis at the Chennai train station. And she was able to earn how much? 3,000 rupees, probably 4,000 rupees in a month. And she had two, one son, another one besides Sharat Chandra Innamalai. And Sharat Chandra Innamalai was excellent in studies, excellent in academics. So he excelled throughout his career. He topped the IIT, one of the premier institutions in India, Indian Institute of Technology. And the best one, Kharagpur, he topped it, gold medalist of IIT Kharagpur. Then he went to IIM, Indian Institute of Management, Ahmedabad, and he topped that one too, gold medalist of both places. Final year, he was offered a package of 18 lakh rupees. It meant a lot in those days. 1981, people were struggling to get that much amount of money. And he was offered that package. And he said, no, I'm not going to work. I'm not going to go for this package. I'm going to do is open my own business. So people said, what you going to do? He said, I'm going to open a business of selling idlis. Everyone thought he went crazy because he has got two gold medalists. Now he's unable to maintain it. 15 years later, he became one of the most successful entrepreneurs of South India. Directly, indirectly, all the idlis of South India, they are coming through his firm. And I did not tell you the story so that all of you can sell idlis, but I told you because what he said after 15 years in an interview was very heartwarming and inspiring. Someone asked him that why did you go for that business rather than actually choosing that package? And he said for 3 reasons. First reason that he said is that I wanted to pay tribute to my mother who worked really hard. एक स्टेशन पे रह करके इडली बेच करके उन्होंने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया. एंड शी इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर. सो आई वॉन्टेड टू पे ट्रिब्यूट. क्या फरारी बेचो तो बिजनेस है और इडली बेचो तो बिजनेस नहीं है? वॉट इज़ द रीज़न? आई वॉन्टेड टू पे ट्रिब्यूट टू हर. सेकेंड थिंग ही सेड कि व्हेन ही वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ IIT ही वेंट टू फॉर स्विमिंग और वहाँ पर वो डूबने लगे. एंड व्हेन ही वॉज ड्राउनिंग हिज फ्रेंड सेव्ड हिम. And while saving, he died. तो उन्होंने कहा कि ये शरीर मेरा है, this body is mine, but I borrowed it from that person. And I cannot use it for wrong reasons. मैं इससे कुछ अच्छा ही करना चाहूँगा. Third thing he said, कि आप जाइए, एजुकेशन लीजिए, हायर एजुकेशन लीजिए, मास्टर्स करिए, M.Tech करिए, MBA करिए, other things that you do. और उसके बाद ही आपको कहीं पर कोई decent job मिल पाएगी. And even after doing MBA and M.Tech, still
your career is not very secure. He said, what about those people जो 8वीं पास हैं, 10th पास हैं, where they gonna get the jobs? And by doing this thing of selling idlis, he created jobs of 5,000 people. 5,000 लोगों को उन्होंने जॉब दिलाई, 8,000, 10,000 कमा रहे हैं, but they were able to get it. So the reason I am discussing with you is that only one thought, and people like you who are sitting in very prime positions of the society, your one decision can influence so many lives, so many people. And that is the reason that we are discussing this topic today. But before we begin to think about that, how the spiritual excellence can play some role in organizational transformation, one thing we need to know that where we went wrong. यदि हम लोग आज गलत ट्रेन पकड़ लें and instead of taking a train to Chennai and we wanted to go to Coimbatore, we are sitting in Mysore, then we need to find out that where we went wrong. To know that where we went wrong, we just have to look at ourselves. आप लोग imagine करिए, आँखें close कर लीजिए कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले, 200 साल पहले we were there. Just imagine that your eyes are closed and you are 2 centuries back. And all of a sudden you open your eyes and you would be startled. Everything around you is changed. This thing would not be there, this thing would not be there. This presentation would not be there. Science, technology, electronics, communication, so many things have come in last 2 centuries or so, that we have progressed like no one else. Who would have thought कि आप चंद्रमा पर जाकर के बैठे होंगे और मार्स पे कॉलोनी बनाने की सोच रहे होंगे? No one. We did remarkable progress in the field of science and technology. But inside, अंदर हम उतने ही खाली होते चले गए. We accumulated so many things for our happiness in an illusion कि maybe यदि हमारे पास कार नहीं है और हम अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन जुटा लेंगे, we would be more happy. Then we thought about rocket, we thought about going to other planet, we thought about going further to another planet. But still, we are lacking inside. अंदर जो कमी है, अंदर जो emptiness है, that is not actually making us happy. If you look at the people around us, और as a psychiatrist हम लोगों की तो जॉब ही यही है कि आप देखें, people are searching for 2 minutes of happiness. हर व्यक्ति को देख लीजिए, everyone is like an island. अपने आप में टूटा हुआ परेशान व्यक्ति है. परिवारों में देख लीजिए, कोई पारिवारिकता नहीं है. There is no concept of family. एक छत के नीचे रहते हैं लोग और अजनबी हैं एक दूसरे से. भाई को भाई पर शक है, बाप को बेटे पर शक है, बेटे को बाप पर शक है. This is not the society that we wanted to have. हम लोगों ने सुख के लिए प्रयत्न किया, but instead we could not get it. और एक हम यदि अपने चारों तरफ नज़र घुमा करके देखें तो जो जो एस्पेक्ट ह्यूमन पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, फिजिकली वी आर नॉट एज वाइटल एज वी यूज्ड टू बी. आप अपने जो लोग भी यहाँ पर ओल्ड बैठे हैं, यदि वो अपने ग्रैंडफादर्स को याद करेंगे, दे वुड नो कि उनके लिए आराम से 100 किलोमीटर चलना, 50 किलोमीटर चलना वॉज नॉट ए प्रॉब्लम. और अभी हम लोगों को यहाँ से होटल की लॉबी तक जाना हो तो 2 बार लिफ्ट लेनी पड़ेगी. आवर वाइटलिटी इज़ गॉन. साइकोलॉजिकली हम लोगों के पास जो स्ट्रेसेस हैं, जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव नेवर इमेजिन दैट बिफोर. इकोनॉमिकली आई डोंट नो अबाउट नेपाल, बट आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, दे आर फेसिंग बिग रिसेशन. छोटे से ब्रेड के टुकड़े के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं. ग्रीस के अंदर, आइसलैंड के अंदर देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एंड देयर इज़ ऑफ कोर्स द क्राइसिस ऑफ फेथ. सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी दे आर स्ट्रगलिंग डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग उनके माध्यम से खुशी ही चाहते थे. खुशी हम लोग पा नहीं पाए. आज के समय में यदि हम लोग सिर्फ कॉरपोरेट सेटिंग को ही मॉडल बना करके चलें तो देयर इज़ ए एग्रेसिव कंपटीशन. हर कोई ये चाहता है कि हम लोग दूसरे से ज़्यादा बेहतर करें. और दूसरे से ज़्यादा बेहतर के जो एक एग्जाम्पल है वो ऑफिस से लेकर के एजुकेशन सेक्टर से लेकर के होम, एवरीवेयर देयर इज़ ए फियर्स कंपटीशन. आई टेल यू ए रियल स्टोरी एंड वेरी फनी स्टोरी. मेरा पहला दिन था इंग्लैंड में जॉब में 2004 में, एंड आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द हैमरस्मिथ ट्यूब स्टेशन. 8:20 सुबह की बात है, 8:20 in the morning. Charing Cross Hospital is only 5 minutes away from the Hammersmith Tube Station. Me and my friend were coming out. All of a sudden he started running and I was running after him कि क्या हो गया पता नहीं, वो एकदम से भागा जा रहा है, मैं भी पीछे पीछे भाग रहा हूँ. तो I asked him, what happened? Like, hospital is only 5 minutes away और 40 minutes बाद पे हम लोग की वो शुरू होनी है. He said, I don't know, everyone was running so I was running too.
कि unconsciously in London, if you go and if you have ever traveled in London transport, you would know कि सब लोग भागे जा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि किस चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं. भागे जा रहे हैं सब लोग एक चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं. गुरुदेव यूज्ड टू टेल ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि जैसे वो आप जाएं तो समटाइम्स दे स्ट्रे डॉग्स आर देयर, कि वो गली में जैसे वो होते हैं कुत्ते होते हैं, वो भाग रहे होते हैं गाड़ी के पीछे. जैसे ही गाड़ी जाती है तो एकदम कुत्ते पीछे से भागना शुरू कर देते हैं. तो गुरुदेव कहते थे ये तो ठीक है भाग रहा है, पर एक दिन पकड़ लेगा तो उसका करेगा क्या, कि वो एकदम यदि उसको एक दिन सच में गाड़ी पकड़ में आ जाएगी तो व्हाट ही इज गोना डू विद दैट कार. और दैट इज द थिंग दैट इज सो ट्रू अबाउट आवर लाइफ्स ऑल्सो, कि हम लोग भागे जा रहे हैं किसी चीज़ के पीछे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांटेड टू चेज, बट एग्जैक्टली व्हाट वी गोना डू इवन इफ वी हैड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट वी गोना डू विद इट. आज के समय में यदि हम लोग इकोनॉमी को देखना चाहें तो उसका जो बिल्कुल सिंपल अंदर की तरफ कॉन्सेप्ट आ गया है वो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को इकट्ठा कर लें. वेदर इमोशंस आर प्लेइंग एनी रोल, वेदर सोशल वैल्यूज़ आर प्लेइंग एनी रोल, ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता. वन ऑफ माई मेरे साथ एक पढ़ते थे एंड ही वेंट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन द सेकेंड ईयर ऑफ मेडिसिन, और लगभग उतने ही आवर्स हैं काम के, बट द थिंग ही इज सेइंग कि द सेटिस्फैक्शन, इवन ही वर्कड फॉर 2 years एज अ डॉक्टर, and said the satisfaction that you used to get is not getting. All the works are same, money is 20 times more, but because the values and the emotional satisfaction is not there, there is a big challenge for humanity to grow. आज के समय में हम लोग यदि देखना चाहें तो एक्चुअल में इकोनॉमी इज कॉट बिटवीन 2 extremes. Either we optimize the profit at the cost of declining inner resources, कि आप या तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लीजिए और you lose what you already have inside. भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी है छोटी सी that I want to share with you because the balance somewhere lies in the middle. There was a prince named Shrotra, and to my understanding actually he lived in Lumbini, and he was a very wealthy prince. He heard the discourse of Bhagwan Buddha, became a monk, and once he became a monk, then he started doing exactly opposite to what he was doing before. So everyone would walk on the normal path, he would walk on the bushes to give tapasya, to give ordusity to the personality. Everyone would eat normal food, he would not eat for many days, and his health started declining. So Bhagwan Buddha came to see him, and he said, Shrotra, you were a good player of veena. आप सब जानते होंगे वीणा क्या है. वीणा इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार. He said, you are a good player of veena. If the strings are too tight, would the music come? And Shrotra said, no, music won't come. If strings are too loose, then music would come. He said, no, music won't come. He said, music only comes when it is absolutely balanced. ज़्यादा टाइट होगा तार तो भी नहीं आएगा, ज़्यादा ढीला होगा तो भी नहीं आएगा. He said, same, the music in the life also comes when it is absolutely balanced. That neither we have to leave everything and sit in the mountain in Himalayas, or nor we have to be so greedy that we are thinking about only taking it from the other person. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो ये था कि चलो मेरा तो ठीक है कि मेरा अपने पास है, पर जब तेरा भी मेरा होने लग जाएगा तब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. मेरा तक तो हम ठीक है कि ओके ठीक है फिर, बट देन इट बिकम्स ए ग्रीड व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग इट योर आल्सो बिलोंग्स टू मी, देन दैट ओनली कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग इनर रिसोर्सेस. एंड इवन इफ वी कंटिन्यू टू वॉक ऑन द सेम रोड, कि यदि हम इसी रोड पर चलते रहे थिंकिंग दैट दिस इज द राइट वे टू प्रोग्रेस फॉर द सोसाइटी, कहाँ पर जाएंगे हम लोग? Individuals would be absolutely broken, families would not be there would not be any morality in the society, and only thing that we would harbor is the stress, anxiety and depression. I may sound gloomy, but actually it is true. I tell you, one of the topmost bankers in UK, and once I had the opportunity to treat him, he owns one of the big buildings in London. All things are there, money endless, family, everything is there, no direction in the life. The only thing he is frustrated about is what I am going to do. I achieved all the things that I wanted to achieve at the age of 40. What I am going to do? What is the purpose? What is the direction? What is the motive? What is the sense? What is the agenda for my life? Only thing that is actually bothering him to
to the state that he is absolutely depressed. One thing that could be a solution, and which was the basis of Indian scriptures and Nepalese scriptures, all our ancient scriptures, is that we have to give a new outlook to the corporate world. I would like to quote Einstein here, that we cannot solve problems by using the same kind of thinking that we used when we created them. हम लोग वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि if we think कि okay, this is the problem, then we use the same strategy to solve it. And if problem is not coming from outside, problem is coming from inside, then we should search for solutions inside. Tell you a very small story of Saint Tiruvallur, a famous saint from Kerala. You know, one person went to him and he said, Ki Gurudev, I went to all ashrams in India, all Guruji, all Maharaj, I went to all of them, I never found the peace. Shanti mujhko nahi mili. Tiruvallur ne, he took a coin and placed it inside of hand. He said, now go and search for it, it is outside in the farmhouse. Mazak kar rahe hain, you are joking? It is in your hand, how can I find it outside? He said, then why are you searching for peace outside? Shanti bhi to aapke andar hi hai. Why are you searching for it outside? So, if the problems are coming from inside us, if problems are coming because there is a different sense of humanity evolving inside us, then we have to search for solution inside us too. और ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे. There are many people actually thinking about it. You would have talked about workplace spirituality 20 years back, you would not find many people. And nowadays, I think this presentation is very old, about 3 years old. At that time, Google search led to more than 800,000 references only to workplace spirituality. Maybe above 1 million now. And I can tell you that, you know, in London, among the doctors, the most, like, you know, doctors have to show that what areas they are interested in. And the most attended group is a spirituality interest group. हर फैकल्टी के अंदर देयर इज ए ग्रोइंग सेंस बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग कि हम लोग के अंदर कुछ न कुछ गलत हो रहा है. Everyone knows inside them कि despite of the fact that I was trying to search for this thing, still it did not give me the happiness, still it did not give me the solace. इससे मुझको न शांति मिली, न आनंद मिला, न सुख मिला. So many people are thinking about it. But the problem is कि जो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर जगहों पर निकल कर के आ रहा है, एंड आई एम टॉकिंग मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेस्ट, मतलब जो बाहर यूके में, यूरोप में निकल कर के आया, वो ये है कि आप लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दे दीजिए, दैट दे शुड गिव स्पेस फॉर temples, you know, churches, mosques, that if you can, you know, sit in the office and do the prayers and other things, that means that we have done our job. कि आपके पास हमने वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी के लिए जो चीज़ हमको देनी चाहिए थी, that we have given to you. कि आपके पास स्पेस मिल गई, आप वहाँ पे ऑफिस में बैठ करके कुछ पढ़ सकते हैं, that is the end of the job. And the reason is क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि their workers should be more dedicated to the workplace, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करिए, कि यदि आप 8 घंटे में काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 घंटे में उस काम को करके निकालिए. But it is still not focusing on the human values. It is still not focusing on the human principles. कि आप उनको सारी सुविधाएं, हम वही मिस्टेक दोबारा करने जा रहे हैं that we have done with the science. साइंस में हमने यही सोचा कि हम ज़्यादा सुख के साधन इकट्ठे कर लेंगे, then people would be happy and then they would work more. Now we are thinking, okay, they are not happy anymore, maybe we should give them more spirituality and then they would be happy and then they would work more. But why the concept of working more should be there? यदि वो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, यदि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, would that not be enough for the society? And that is the thing that we wanted to discuss here. But before we discuss that, what is the spirituality at workplace, or what is the concept of spiritual excellence at the workplace, we first need to understand what spirituality is. बहुत सारे लोगों के लिए अध्यात्म की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं. बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ के लिए दिन में मंदिर जाना, चर्च जाना या अपने रिलीजियस प्लेस पे जाना अध्यात्म की परिभाषा हो सकती है. I want to share one small story with you. And it is the story of Nachiketa. I am sure that most of you have heard. He is the center of
one of the most, valuable Upanishads came out of India, Kathopanishad. He was the son of a famous king called Vajashrava. Vajashrava ka putra tha Nachiketa, he was 8 years old. And he saw that his father committed that when he would complete the yajna, he would donate 1,000 cows. 1000 gayeं वो दान में देंगे. And when yajna was finished and Vajashrava started giving the cows, he saw that father is only giving the cows which are of no use. जो barren थी, जिनका कोई use नहीं था, he started giving those cows. So he went to his father and he asked him that, why are you giving these cows? Because the purpose of donation is to give right thing to the right person, and you are neither giving the right thing. So he said, he did not answer. 2 times he asked the question, he did not answer. 3rd time when he asked the question, Vajashrava got very angry and he said, you are most valuable to me, I donate you. मैं तुमको ही दान दे देता हूँ. किसको दान दे देते हैं? Well, I give you to death. मृत्यु को दान देता हूँ. So Nachiketa decided that now I have got no control on myself. मैं तो donate हो चुका हूँ. तो I should walk to the Yama. मृत्यु के जो देवता हैं, I should walk to his house. So he reached to his house. 3 days it took him, and then he reached there. And then he had to wait for 3 more days because Yam was not there. When Yam returned, Yam said, कि दान not only depends upon the person who is giving, but also upon the person who is accepting. मैंने तो कभी कहा नहीं था कि भाई आप मेरे पास आ जाओ. So I cannot accept you. So I cannot take your life. But instead, because you waited for 3 years, I will give you 3 blessings. 3 वरदान मैं आपको दूंगा. Other 2 vardans I am not going to talk about. One of them he asked, what is Adhyatma? अध्यात्म क्या है? और जो उत्तर यम ने दिया वो था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती. कि ये छुरे के धार पर चलने के समान रास्ता है, जहाँ पर आपने यदि जिंदगी में एक बार प्रिंसिपल्स ले लिए, once you have committed to the right principles one time in life, then you would be judged, you would be tested, you would be examined every second. Forget about spirituality, ask me something else. Nowadays it becomes so easier to be spiritual. आप दिन में एक बार जाकर के घंटा बजा लीजिए, मंदिर में जाकर के एक चढ़ावा दे दीजिए और आपकी ड्यूटी खत्म. इसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं. राइट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है नहीं, आपको अच्छे सिद्धांतों को जीवन में लाना है नहीं, अच्छे आदर्शों को जीवन में लाना है नहीं, अच्छा इंसान बनना है नहीं. हमारा काम 23 आवर्स 55 मिनट्स हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, 5 मिनट हम वो करेंगे जो हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड आवर जॉब इज डन. That is not, unfortunately, the spirituality. Spirituality has got no boundaries. जरूरी नहीं कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति हो उसने गायत्री मंत्र किया हो, उसने किसी तरीके की साधना करी हो, किसी तरीके की तपस्या करी हो. अच्छे इंसान को पहचानने की क्षमता हम में से हर एक के पास है. हम सबको पता होता है who is a right person, who is a genuine human being. I tell you one small example and then I would move to the next slide. Sokomi. Sokomi was a famous Buddhist monk. बड़ा प्रसिद्ध बुद्ध monk हुआ है 16th century में. He was the first person who translated all the Buddha sutras into Japanese. पहली बार उसने जापान के जितने सूत्र थे उनको जापानीज में ट्रांसलेट किया. And when he was to publish, he did not have enough money. Those days actually printing was extremely costly. तो एक डोर तक जापान के गया to collect the money. It took him 10 years to collect the right amount of money. 10 years. 10 साल के बाद जब वो वापस आया और उसने उसको पब्लिश कराना शुरू किया, सेम टाइम जापान वॉज हिट बाई अर्थक्वेक. जापान में एक अर्थक्वेक आ गया और सोकोमी ने कहा साहब मैं इस पैसे को लेकर के क्या कर सकता हूँ, इट डज नॉट बिलोंग टू मी. जनता का पैसा है, जनता को वापस जाना चाहिए. ही गिव इट बैक टू द पीपल. सेकेंड टाइम में इट टुक हिम 12 years टू कलेक्ट द राइट अमाउंट ऑफ मनी. 12 साल लगे, बिकॉज वही लोग थे, आज की तरह माइग्रेशन तो था नहीं. Same people did not have enough money. It took him 12 years. The second time he completed it, Japan was hit by an epidemic. महामारी आ गई जापान के अंदर. He again gave all the money back to the people. तीसरी टाइम में it took him 36 years to publish that book, Buddha Sutra. And he called it third edition, तीसरा संस्करण. Although it was published for the first time, but he called it third edition. 2 बार तो उसने लोगों के दिल में छपाया था. और उसको मैं अध्यात्म बोलूँगा. I will call that as spirituality. Whether he went to any religious place or not does not matter, but what he did was right for the person. And that is the basis of spiritual excellence, and that basis is called the social service.
कि आप समाज सेवा के माध्यम से जो करते हैं, आज की तारीख में पीले कपड़े में गायत्री परिवार से लोग आते हैं, डिवाइन यूथ क्लब के बच्चे वहाँ पर खड़े हुए हैं, इतने सारे आर्मी वाले लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, इतने सारे पत्रकार, इतने सारे अभिनेता, इतने सारे विभिन्न सोसाइटी के लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर यूनाइटेड। जैसे माला के अंदर डिफरेंट बीट्स होती हैं, दे ऑल आर यूनाइटेड विद सिंगल कॉज, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस ऐसी चीज़ है जो हर एक के दिल को एक दूसरे से छू करके चली जाती है, कि दे आर यूनाइटेड फॉर ए वन कॉज। शुरू से ही जो अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे उनकी यही थिंकिंग थी कि एवरीवन शुड लिव फॉर द सोसाइटी। जो धर्म की परिभाषा वेदों में, उपनिषदों में दी गई वो थी यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स धर्म, कि जो इस जीवन में अभ्युदय और उस जीवन में श्रेय प्रदान करे। दैट सिंपली मीन्स कि यदि मैं अपना जीवन जी रहा हूँ एंड माई लाइफ इज़ लाइक ए बुक, और मेरे जीवन में हर एक जगह पे अलग अलग चैप्टर्स हैं, एट द लास्ट मिनट आई शुड नॉट फील गिल्टी कि मुझे अपना जीवन किसी और तरीके से जीना चाहिए था। दैट वन लाइन ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू चेंज इट। I should be so proud of my life. I should be so happy. I should be so satisfied with my life कि मैंने अपने जो जीवन को जिया, that was absolutely right. There was nothing wrong in that life. And that was the simple basis of the dharma. धर्म का मतलब था righteousness. धर्म का मतलब था right thinking. धर्म का मतलब था सही सोच. Second thing was, the other principle that we have forgotten in today's world is ayam nijah paroveti ganana लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि जो सिर्फ मेरा मेरा सोचते हैं, अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम, उनकी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट स्मॉल थिंग्स। फॉर द पीपल हु हैव गॉट धर्म, हु हैव गॉट द राइचियसनेस, हु हैव गॉट द स्पिरिचुअलिटी इन देयर हार्ट, फॉर देम whole world is a big family. Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudha means the earth. For them, the whole world is a big family. So why cannot we live in the same manner? अभी थोड़ी देर पहले मुझसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे थे, एक आए थे पत्रकार, तो उनने एक प्रश्न पूछा कि गायत्री परिवार तो हरिद्वार में है, उनको बागमती की चिंता क्यों है? तो मैंने उनसे कहा कि अभी आपने बोला अखिल विश्व गायत्री परिवार, तो पहली बात, जब विश्व का ही परिवार है तो फिर बागमती क्या और गंगा क्या और थेम्स क्या, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। दूसरी बात यह है कि बागमती को हम सिर्फ नदी मान करके क्यों चलें? बागमती या किसी और नदी को भी हम सिर्फ नदी मान करके क्यों चलें? वो नदी तो हमारी माँ होनी चाहिए थी ना। जिस नदी के साथ हम लोग, जिस नदी को हम लोग माँ कहते हैं, जिस प्रकृति को हम लोग माँ कहते हैं, जिस धरती को हम लोग माँ कहते हैं, उसी के साथ हम लोग इस तरीके का व्यवहार करने लग जाएं, विच इज़ नॉट राइट। हु वुड बिहेव इन सच ए मैनर विद हिज ओन मदर? यदि हम लोग सिर्फ माँ ही मान करके चलें तो फिर इस तरीके की नौबत कभी आ ही नहीं सकती। एक परिवार यदि हम लोग मान करके चलेंगे तो आज की तरीके का दिन हम लोगों को कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा जो सूत्र उन लोगों ने दिया वो ये था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख माप्नुयात्। इतना बढ़िया सूत्र है कि इवन द पीपल हु डू नॉट बिलीव, यदि आपके लिए चीज़ बिल्कुल बिलीव से बाहर हो, इवन इफ यू डू नॉट एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, you still should get benefit out of it. Sarve bhavantu sukhina. Everyone on this planet, everyone under this sun should get the benefit out of the work that we are trying to do. कि हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलना चाहिए. And I am not talking about the religious principles. I am talking about the principles that are valuable for every human being. I am talking about the principles that are right for me here, that are right for you in Kathmandu, that are right for anyone else sitting in London. They are not talking about anything that give importance to a particular thinking. Last one, and that comes from Shukla Yajurved, Kanva Shakha, Ishavasya ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सुधनम. कि इफ वी थिंक दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू द भगवान, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, जो हमने किया जो नहीं किया, हमारा क्रेडिट उसका क्रेडिट, दैट ऑल बिलोंग्स टू वन डिविनिटी इटसेल्फ, तो फिर ये अहंकार अंदर नहीं आता. इसीलिए गुरुदेव ने 4 सूत्र समाज सेवा के बताए: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा. साधना वॉज फॉर द इनर रिफाइनमेंट, कि आप अपने आप को रिफाइन करिए, अपना परिष्कार करिए. एंड दे आर इन पिक्यूलियर ऑर्डर, कि आप जब साधना करेंगे, यदि इफ
you do the seva, if you do the social service without sadhana, if you do the social service without doing individual refinement, there is always a tendency that you would develop ahankar. कि यदि मैं ये सोच करके बिना अपने आप को रिफाइन करे, बिना अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करे समाज में जाकर के काम करने लग जाऊंगा, वो हमेशा डर है कि उस व्यक्ति को अहंकार डेवलप हो जाएगा कि मैंने इस समाज को बदला। मैं बदलने वाला कौन होता हूँ? जिसकी दुनिया है वही बदलेगा। मैं एक माध्यम बन गया, ये बात अलग है। आई बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अनदर थिंग। बट जब तक वो अहंकार होता है तो वो आपको फिर दूसरे कार्य कराने लग जाता है। इसीलिए उन लोगों की थिंकिंग थी कि आप सबको, सारी दुनिया को एक मानिए, वसुधैव कुटुंबकम, और जो कुछ भी आप अच्छा कर पाए सोसाइटी के लिए, दैट यू शुड रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी थिंकिंग कि इट ऑल बिलोंग्स टू द डिवाइन। Two more slides that I would like to talk about. Gurudev gave 4 sutra because we are talking about organizational transformation. And he said that organizational transformation is not possible without individual transformation. Ultimately, एक individual से ही society create होती है. If the cell is wrong, tissue is gonna be wrong. Tissue is wrong, organ is gonna be wrong. Organ is wrong, system is gonna be wrong. तो यदि एक individual भी wrongly placed है, एक individual भी वो अपनी जगह पर satisfied और soulless management में है, he would not be able to achieve anything. So he gave 4 principles for the society. एकता. First thing is unity. कि हम लोग आपस में मिलकर के, अभी आपको ये न लगे कि गायत्री परिवार का काम है, ये सबका काम है। काम सही होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि उसको कौन कर रहा है, कोई भी करे, पर काम सही और काम अच्छा होना चाहिए। तो अनलेस वी हैव गॉट दिस फीलिंग कि वी ऑल आर यूनाइटेड फॉर द राइट कॉज एंड गोइंग फॉर द राइट डायरेक्शन, वी वुड नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग सस्टेनेबल। कभी कभी क्या होता है कि मैं इसको इसीलिए लेक्चर के रूप में आपको नहीं बोलना चाहता। आई वॉन्ट इट टू कि वो जो एक सीड है वो आपके अंदर कहीं पर प्लांट हो जाए, एक बीज आपके अंदर कहीं छूट जाए और आपको लगे कि वो बात थी दैट इज राइट फॉर आवर सोसाइटी। समथिंग वैल्यूएबल दैट यू कैन डू फॉर नेपाल, समथिंग वैल्यूएबल दैट यू कैन डू फॉर द ह्यूमैनिटी, समथिंग वैल्यूएबल दैट यू कैन डू फॉर द सोसाइटी, देन पर्पज ऑफ आवर विजिट इज सर्व्ड। हम लोग यहाँ पर किसी ऐसे एजेंडा को लेकर के नहीं आए। हु वुड ट्रेवल फॉर 3 days विदाउट स्लीपिंग just to clean the river for 1 day and then go back again? आप पीछे जो लोग बैठे हैं, it took them 3.5 days non-stop. They came from Haridwar and now they are here only for 1 day to clean and then they would return tomorrow. इसके पीछे कोई इस तरीके की थिंकिंग नहीं है कि हम लोगों को बदले में कुछ मिलना चाहिए। थिंकिंग सिंपल है कि हम लोग यूनाइटेड होकर के सही कॉज के लिए काम कर सकें। दूसरी थिंग ही टॉक्ड अबाउट इक्वलिटी, समता। एक ये थिंकिंग ऑल ऑफ अ सडन लोगों के अंदर आ जाती है, खासकर किसी भी तरीके की सेटिंग को हम लोग ले लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग हो, कि एक हायरार्की डेवलप हो जाती है। हायरार्की डेवलप हो गई तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ला पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज द हार्मनी टू द सोसाइटी, कि हम लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रह सकें। वाई शुड देयर बी ए स्ट्रक्चर कि one should be directing other people that how this should be governed? इस तरीके की थिंकिंग हम लोगों के अंदर पहले कभी नहीं थी। दूसरी बात ममता और शुचिता, कि अनलेस देयर इज कंपैशन, अनलेस देयर इज काइंडनेस, अनलेस कि अंदर से जो थॉट निकल करके आ रहा है कि सामने वाला जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एकता एंड समता कैन नॉट बी अचीव्ड। एक इक्वलिटी और जो यूनिटी है, इसको तब तक हम लोग अचीव नहीं कर सकते जब तक इंडिविजुअल के लेवल पर काइंडनेस और कंपैशन निकल करके ना आ रही हो। और दैट थिंकिंग वुड ओनली कम व्हेन देयर इज शुचिता, व्हेन देयर इज ए पायस थिंकिंग। जब हमारे अंदर एक इस तरीके की थिंकिंग होगी कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू द सोशल सर्विस, देन ओनली वी वुड बी एबल टू अचीव इट। कुछ दिख रहा है इसमें? इज इट पॉसिबल टू सी एनीथिंग? No, okay, then I will talk about it. The 3 things that Gurudev said, and it's the last slide before we go to the little introduction of the organization. He said that how it is possible to give some sutras for individuals that what they should do. And he said first thing is the upasana, and upasana simply means imbibing the great qualities from the great people, or anyone could be a great person, anyone could be a role model, anyone could be an ideal. It does not necessarily mean कि आप कहीं पर भी बैठे हों और आपको कोई भी राइट व्यक्ति जो है मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हम किन्हीं ही चीज़ों को लेकर के चलें और उनको मान करके चलें कि यही हमारे जीवन में मॉडल होने चाहिए। उप का मतलब होता है पास, आसन का मतलब बैठना।
तो जब आप किसी के पास बैठेंगे, what you gonna do? You sit next to the fire, you're gonna get the heat. You sit next to Everest and you're gonna get the cold. आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी के पास बैठेंगे उस तरीके के गुणों को हार्बर करेंगे. सो ही सेड सिंपली चूज द राइट मॉडल करेक्टली. अपने जीवन में रोल मॉडल्स ऐसे लें जिनके पास से आप जीवन में कुछ सीख सकें. साधना इज टू गिव डायरेक्शन टू द लाइफ. क्या डायरेक्शन हमारे जीवन का है ये हम लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा. वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन वी वुड लाइक टू हैव. हमारे बीच में और जानवरों के बीच में दैट इज द सिंपल डिफरेंस. नो एनिमल इज सिटिंग लाइक दिस एंड टॉकिंग अबाउट देयर वेलफेयर एंड देयर फैमिलीज वेलफेयर एंड देयर सोसाइटीज डेवलपमेंट एंड देयर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस. जो एनिमल में और इंसान के बीच में डिफरेंस है वो सिंपली इतना है कि ह्यूमन बींग्स हैव गॉट टेंडेंसी टू सेट ए डायरेक्शन फॉर देयर लाइफ. और न केवल वो अपने लिए अच्छा सोचते हैं बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा सोचते हैं. So that direction we have to find for ourselves, and Aradhana is the selfless service to the society. Selfless service to the society is the social work. कि हम लोग वैसा काम करने की कोशिश करें जिसमें बातें कम हो और काम ज़्यादा हो और हर एक के बेनिफिट का हो, हर एक के एडवांटेज का हो. उपासना, साधना, आराधना. Lastly, the place that we all come from is the Shanti Kunj Haridwar. It is a great place that Gurudev built. It is a headquarter of worldwide, all world Gayatri Parivar. It grew, it started as a small family in 1943 with 200 people. And nowadays there are 110 million members with 9,000 centers worldwide. He had a very simple vision. He had a simple vision that the way humanity is living is not accepted by the divinity anymore. We cannot continue to live on the basis of inequality or hatred among each other. The only way we can change this solution is by changing the way we think. So he called it thought transformation movement. Few things that you would find unique in the Shanti Kunj, that he based the management, especially the management aspect I want to share with you, he based it on two simple principles, Samaydan and Anshdan. Samaydan was the concept, Anshdan was the concept of part donation. So you go inside the Shanti Kunj, it's a 500-acre campus, 25,000 people can live there, but not a single penny charged to any person since it has been established. Come registration free, lodging boarding free, food free, no charges. And the only way he was able to do it is that he said to every single person that you should give 10 paisa a day. 10 paisa a day is how much? 3 rupees a month? 3 rupees a month is negligible amount of money. Negligible amount of money. But when 110 million people, they give it, it runs the organization for free, 9,000 centers for free, and so many people, they are able to take the advantage of the premises. So great thinking in terms of financial management. And what else it creates? It creates a spiritual socialism. Person sitting left to me may be able to fly in a private jet. वो हो सकता है jet में उड़ सकते होंगे. And this person can only afford 200 rupees a month. But they both are equal members to the organization. दोनों के दोनों equal members हैं, they both are stakeholders to the organization, और दोनों के दोनों उसी परिवार के एक रूप में सदस्य हैं. Second thing that he created was the Samaydan. Samaydan was the idea that whatever you are doing, आप अपनी प्रतिभा का, intellect का, give 1 hour free for the society. So whatever you are doing, you are a doctor, continue to do what you want to do, but give 1 hour free for the society. Samaydan. और इसी तरीके से सारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वी हैव गॉट 50 bedded hospital runs for free for the people. All the resources within the campus, 3,000 people, they are living permanently on this time donation basis, on life donation basis, and they have chosen to live free for the society because they have believed into that thinking. And this is a simple way of managing that. If the social service is at the heart of actually trying to serve the people, then of course this could be achieved. If it could be achieved in one place in 9,000 centers in 110 million people, I'm sure it could be achieved at other places too. This is a photograph of the place that we come from, Shanti Kunj. Shanti Kunj is the ashram, and this place, this photograph was taken in 1986, so of course the geography is absolutely changed now. Behind the thing that you are seeing, this thing is the original Shanti Kunj. Shanti means peace, Kunj means garden. This premises, they are called Gayatri Nagar, and now from here to here it is Sri Rampuram, and this side is the Bhagwatipuram. So it's a big campus now. This since the photograph is taken, it's very much changed.
And you have heard about Gayatri Parivar so many times from today, this morning until now. So just wanted to show you that how do we look like. Second is the Brahma Varchas Shodh Sansthan. It's a research center that Gurudev established in 1979, and his idea was to bring the concept of science and spirituality together. To be very precise, what he said, that spirituality loses its credibility when it's not scientific in approach. लोग बातें करते हैं, but it is not in their life, so they are unable to show anything for the society. And science becomes destructive if it is not spiritual in nature. So he said they both need to be together. वही परमाणु है, either you can use it to create energy or you can use it to create bomb. It's only a difference of the thinking. वही साइंस है, उससे हम लोग जनता का भला कर सकते हैं, और वही साइंस है जिससे कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना सकते हैं. इट्स ओनली द सेम थिंग. इट्स ओनली दैट हाउ वी चेंज द वे वी थिंक. सो ही सेड द साइंस बिकम्स डिस्ट्रक्टिव if there is no spiritual approach, and that is why he created this research center, and wonderful piece of research on yagya, yoga, mantra, meditation, they were conducted in this research center. Third campus is the Deva Sanskriti Vishwavidyalaya, and it came in 2002, and based on some simple concepts. One, Gurudev said the education at the moment is only providing us the literacy. It's not giving us the values. That it's not necessary that a student would go to the university and return being a better individual. So he talked about value-based education, and it's a fully residential campus. हम लोग गुरुकुल परंपरा पर यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, and about 1400 students we have on the site. It's a 92-acre campus, and widely praised by the University Grant Commission. When they came to see it, they said it's a unique model and it should be preserved for the future. कि जिस तरीके की थिंकिंग के साथ आप लोग चल रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट टेक एनी ट्यूशन फी, वी डू नॉट टेक एनी ट्यूशन फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एंड especially the ones who are not financially privileged and they are academically worth, they get a chance to come to the university. And although we are teaching 15 different faculties, yoga we are one of the largest in India, but we are also good in computer sciences, animation and other modern disciplines. We are not taking any tuition fee, and the reason we are not taking any tuition fee because society is contributing for their education. And what they do, because society is contributing for their education, they return it back to the society. So हर student के लिए 3 महीने की mandatory social internship है. Raju Adhikari that you have just heard, he is a product of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. That he came for this 3-month social internship and he worked for free to the different villages of India. और यहीं से जो सोशल सर्विस का जो बेसिक एम है, दैट वी ट्राई टू इंस्टिल इनटू द स्टूडेंट्स दैट ओके फाइन दैट दे हैव रिसीव्ड द एजुकेशन, बट दे शुड आल्सो लर्न दैट हाउ दे शुड यूज इट फॉर द सोसाइटी. This is the Samadhi of Param Pujya Gurudev, Param Vandaniya Mataji in Shanti Kunj. 7 things that he left for us. They are called Sapta Sutri Andolan. One thing was sadhana, of course, individual refinement. Other was shiksha, that free education to all. That as many people that we should be able to serve, we should provide them the free education. And apart from providing the free education, we also provide something called as the Bharatiya Sanskriti Gyan Pariksha, that an elementary understanding of the Indian and Vedic culture. That is a scholarship examination that we offer free books to the students and take the examination after a year. And right now it started with 200 students, and right now about 4.8 million students are sitting in examination throughout the India in 65,000 schools. That's a big project. And besides that, we have got a rural upliftment project, Gramotthan. 1965 Gurudev started a project with 3 things in mind. कि जो ग्राम है उनको बदलना चाहिए. You know, ग्राम means village, उत्थान means upliftment. So 1965 he took 3 things in hand. One thing was स्वास्थ्य, सेकेंड वॉज स्वच्छता, थर्ड वॉज स्वावलंबन. कि गांव के अंदर हेल्थ आनी चाहिए, क्लीनलीनेस, हाइजीन आनी चाहिए और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए. 1965 फर्स्ट टाइम पीपल वेंट, द विलेज पीपल दे वर वेरी स्केप्टिकल. आइडिया ये था कि 100 लोग मिलकर के एक गांव को 1 साल के लिए अडॉप्ट कर लेंगे एंड दे वुड चेंज इट कम्प्लीटली. पीपल वर वेरी स्केप्टिकल. They thought कि it's like other NGO come photographed and disappear. तो उन लोगों ने सोचा कि no. So Gurudev said no. Rather than making it a social activity, we make it a spiritual activity. Everyone, we go once in a month in the selected village. 100 volunteers, they go 7 o'clock in the morning to the chosen village. Complete silence. In the morning, they clean the village until 10 o'clock. Swachhata.
10 o'clock we start the health camp until 1 o'clock. 1 o'clock we start the seminars on the self-entrepreneurship. The 23 skills that one person can learn by not investing anything. As a principal, we don't get involved wherever the money is. If they are earning any money, then it's a business between them and the vendor. But we are there to provide them free skills. जो भी चीज़ आप शांति कुंज के अंदर देखेंगे, that is actually developed there. This kurta that I am wearing is actually product of our Swavlamban department. जो village में काम करते हैं वो लोग इस कपड़े को बनाते हैं, and that is where the kurta is coming from. So whole society is actually dependent and developed from this concept of the social service. Param Puji Gurudev, Param Vandaniya Machaji, and that's where I would like to end. That I said that Gurudev, who had this great vision, he was a groundbreaking scholar, wrote more than 3,200 books. Only person who have single-handedly translated all the Shrutis, all the Smritis, all the Richas of ancient scriptures. Besides that, he was a great visionary. You look at the life of many people and you think that is it possible for them to achieve so much in one life? Writing more than 3,500 books, creating such an organization when more than 5,000 centers were personally established by him, that he visited to all these Shaktipeeths and all the centers. We have got more than 6,000 lectures catalogued, and that is on, when he insisted that none of his lectures should be recorded, and God knows how many are there still to be found out. Great orator, great speaker, great writer, and above all, divine being. He touched hearts of many people and inspired many people, and whatever we are able to do good things for us or for the society is only because of the guidance and supervision that we have received from him. So that's where I would like to end, and I hope that it was useful to you in some ways, and anything that you were able to take from here would be really appreciated, because that's not coming for us, but that is coming for the society. Many thank you. I don't think I should be speaking after Dr. Pandya. But I have been given the duty to speak. So I would just want to utter one word, which has 3 letters. That is wow. Sitting beside our honorable guest, to translate if possible. समादरणीय यहाँ आमन्त्रित विशिष्ट पाहुनाहरू, विशेष पाहुनाहरू, गायत्री परिवार हरिद्वारबाट पाल्नुभएका विशेष पाहुनाहरू, झन्डै 1 महिना जति पहिल्यै गायत्री परिवार नेपालका नेपाल शाखाका अध्यक्ष र मेरा पनि गुरु, उहाँले कलाकार सङ्घका अध्यक्ष र विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष 2 जना सँगै भानु सर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई लिएर केही कुराकानी गर्न भन्दै आउनुभयो। डाक्टर राजु अधिकारी मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले भनेपछि पक्कै पनि मलाई यो फाइदा हुने कुरा हो भन्ने ठानेर सहभागी भइयो हामी छलफलमा। उहाँले अहिले यहाँ देखाइरहेको बागमतीको दृश्य देखाउनु भयो र लास्टमा त्यहाँ एउटा प्रश्न थियो, के यस्तो हुन सक्छ भन्ने थियो। अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ नहुने कुरै छैन,
अनि हुन्छ भने कसरी हुन्छ, कसले गरेर हुन्छ त बागमती सफा भन्ने कुरो आयो। फोहोर हामीले नै गरेको हो, सफा हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण म सरकारी क्षेत्रका जो जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरू छन् ती निकायहरूलाई संयोजन गर्छु। तपाईँ चाहिँ यो कलाकार साथीहरू र विज्ञापन एजेन्सीसँग सम्बद्ध साथीहरूलाई संयोजन गर्नुहोस्। सँगै अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि संयोजन गर्नुहोस्। र सँगसँगै हामीले के पनि जानकारी पायौँ भने गायत्री परिवार, जसले भारतमा असाध्यै धेरै यो सामाजिक काम गरेर त्यस्ता नदीहरू, प्रदूषित नदीहरू सफा गरेर त्यो ज्ञान र अनुभव हासिल गर्नुभएको छ, उहाँहरूको ज्ञान र अनुभवबाट हामीले पनि सिकौँ र उहाँहरूबाट प्रेरणा पनि लियौँ। असल काम गर्ने मान्छे अगाडि देख्दा, असल काम गर्ने मान्छेको मुखबाट असल कुराहरू सुन्न पाउँदा हामीलाई त्यो चाहिँ यता प्रेरणा जाग्छ, केही गर्ने इच्छा जाग्छ। केही गर्नको लागि मान्छेलाई इच्छा हुनु पर्यो। त्यो इच्छा जगाउनको लागि उपयुक्त वातावरण भनेको गरिसकेर प्रमाणित गरेको मान्छे अगाडि आएर देखायो भने विश्वास बढी हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ र उहाँहरू हामीलाई उत्प्रेरणा जगाइदिन आउनुभयो। त्यो धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा उत्प्रेरणा जागोस् भनेर हामी चाहिँ हिजो फुटबल खेलेको, मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको धेरैभन्दा धेरै काठमाडौँवासी, खास गरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो सन्देश जाओस्, बागमती फोहोर छ, त्यो फोहोर हामीले गरेको हो, हामीले सफा गर्नुपर्छ र हामीले गरेपछि सफा हुन्छ र हामी सक्छौँ।